Way forward to natural resources. Allah has gifted us with all kind of resources, natural resources, human resources. Our country is rich in natural resources. Natural resources are necessary for national development. Natural resources are very important for the development and prosperity of any country. The important thing is that how to utilize them for welfare of human beings and development of the country economically. While the population of Pakistan increasing rapidly, the world's natural resources are under growing strain. सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अंडर ग्रोइंग स्ट्रेन में है. Population growth, extractive technologies and consumer demand are putting unprecedented pressure on land, forests, water sources, and the air. The continued search for hydrocarbons and minerals is pushing exploration into more technically challenging and environmentally sensitive areas. As the pressure mounts, so will dispute over resources. While there is nothing new about such disputes, their potential to undermine peace and security is an increasingly interconnected world is growing. हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज पे डिस्प्यूट्स हैं ये कोई नई बात नहीं है. ये पूरी दुनिया रिसोर्सेज के डिस्प्यूट्स की वजह से इस प्रेशर में, स्ट्रेन में है. हम देखते हैं कि पानी के डिस्प्यूट्स हैं, हमारे और पड़ोसी मुल्क के साथ डिस्प्यूट्स चलते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में जो है ऑयल जहाँ पे है वहाँ पे ऑयल की वजह से डिस्प्यूट्स चलते हैं. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिस्प्यूट्स हैं ये एक ऑन गोइंग फिनोमिना है जो चलता ही है साथ साथ. इट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग हार्ड सिंसियरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री and government also working for the progress and prosperity of Pakistan. We should have to use the national and human resources to maximum to develop our country so we can achieve an important position in the world. अगर हम अपने resources को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, available resources को maximum utilize कर सकें. Natural resources play very important role in the economic development that leads to high living standards. Natural resources like forest, fisheries, oil, land और अदर जितने भी बाकी गैस और ऑयल उसकी बात है, ये जो है ये पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. More employment opportunities develop the social setup of the country. They contribute toward fiscal revenue, income, and poverty reduction of the country. Sectors related to natural resources use provide jobs and are often the basis of livelihood in poorer communities. Owing this fundamental importance of our natural resources, the natural resources must be managed सस्टेनेबिलिटी. उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट में हमें सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए. जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स को सस्टेन कर लेंगे, उनमें सस्टेनेबिलिटी ले आएंगे, उनके यूटिलाइजेशन को बेहतर कर सकेंगे, उसकी मैनेजमेंट को हम बेहतर कर सकेंगे, तो हम अपने पुअर सेगमेंट को, अनएम्प्लॉयड सेगमेंट को जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकेंगे, हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकेंगे, हम अपने मुल्क का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी हम अच्छा कर सकेंगे. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है, ऑयल है, एनर्जी है, गैस है, ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट.